Hi everyone, I hope you all are doing well. So in this video we will learn about the socket programming. If you all are also facing problem with the socket programming, trust me, you are on the right video. So if you are new to this channel, don't forget to subscribe our channel and hit the like button. So without wasting our time, let's start the video. So basically what is the socket? Socket क्या है? So socket is an interface between the application process layer and the transport layer, right? So basically transport ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में. तो सॉकेट की हेल्प से हम करते क्या है? सॉकेट की हेल्प से जो भी हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशंस होता है वो पॉसिबल होता है. सॉकेट क्या करता है? सॉकेट एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में, राइट? सो अब सॉकेट्स की टाइप क्या है ये देखिए. सॉकेट बेसिकली कई टाइप के हो सकते हैं. इंटरनेट सॉकेट होता है, यूनिक सॉकेट्स होता है एंड ये ऑल्स होता है. बेसिकली हम यहाँ पे इंटरनेट सॉकेट्स के बारे में देखेंगे. इंटरनेट सॉकेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय आईपी एड्रेसेस, राइट? सो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर जो कि आप जानते ही हो. सो आईपी एड्रेस हमेशा 4 बाइट्स के होते हैं और हमारा जो पोर्ट नंबर होता है वो 2 बाइट्स का होता है. आईपी एड्रेस में हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, या फिर IPv4 या फिर IPv6. These are the type of the IP addresses. So let's see the socket description. How basically it works. So we have one side server side and another client side. So in the server and in the client we have all the layers like application process, transport, network, data link layer and the physical layer. सो बेसिकली जो हमारा सॉकेट होता है वो एप्लीकेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट के बीच का जो इंटरफेस होता है वो होता है मेरा सॉकेट. सेम जैसे सर्वर में होता है उसी तरीके से क्लाइंट के साइड भी ये प्रोसेस होता है. सो बेसिकली ये एक यूज़र स्पेस है जो भी हमारा सॉकेट के ऊपर लाइक प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस और सॉकेट इंटरफेस के बीच में जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा यूज़र स्पेस के अंदर आता है. और इंटरफेस के बाद सॉकेट के बाद ट्रांसपोर्ट टू फिजिकल दैट इज़ कर्नल स्पेस, राइट? अब बेसिकली इनके बीच में कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है? वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, लाइक आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट की हेल्प से किया जा रहा है, राइट? सो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, सॉकेट डिस्क्रिप्शन. अब देखते हैं कि टाइप ऑफ इंटरनेट सॉकेट्स. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरनेट सॉकेट्स. One is TCP and another one is UDP. TCP is Transmission Control Protocol and UDP is User Datagram Protocols. So basically होता क्या है? जो भी हमारा TCP होता है उसके लिए हम SOC स्ट्रीम का यूज़ करते हैं और डेटाग्राम सॉकेट्स के लिए SOC डीग्राम का यूज़ करते हैं इन सॉकेट प्रोग्रामिंग्स. जो भी हमारा TCP होता है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और जो भी हमारा स्ट्रीम सॉकेट्स होते हैं, स्ट्रीम सॉकेट दैट इज़ स्ट्रीम that is the connection oriented and it rely on the TCP to provide the reliable two-way connected communications, right? And in the UDP it's opposite, the connection is unreliable. And so this was the type of the internet sockets. So here what we see the socket description and the type of the internet sockets. Now in this video we will see basically about the UDP, that is the connectionless protocol, and we know that UDP is non-reliable, right? So basically in socket we have one server side and another one is a client side, right? So firstly होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. जैसे कि हमारा पास एक सर्वर है और एक क्लाइंट है. तो बेसिकली सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर में सबसे पहले कौन सा रन करता है वो समझते हैं. जैसे कि आप एक एग्जांपल लो कि आपको मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाना है, राइट? तो आप मार्केट में कब जाओगे? क्लाइंट मार्केट कब जाएगा? सर्वर के पास कब जाएगा? जब सर्वर ओपन होगा पहले से ही, राइट? क्योंकि आप तभी ना जाओगे मार्केट में जब ये पहले से ही मार्केट खुला होगा. तो अब जब क्लाइंट सर्वर के पास जाता है तो सर्वर को पहले से ही खुला होना चाहिए, लाइक पहले से ही वो सॉकेट बना के रखेगा. तो इसीलिए सबसे पहले सर्वर अपना सॉकेट बना के रखा, फिर उसके बाद वो बाइंड कर लिया आईपी एड्रेस और पोर्ट. बेसिकली बाइंड क्या करता है? बाइंड एसोसिएट्स द आईपी एड्रेस एंड पोर्ट फॉर द सॉकेट, राइट? सो यहाँ पे सर्वर सबसे पहला सॉकेट क्रिएट किया, फिर उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस और पोर्ट होगा वो बाइंड करके रखा.
राइट। अब यहाँ पे क्लाइंट क्या किया, क्लाइंट भी अपना सॉकेट प्रिपेयर किया, सॉकेट क्रिएट किया, फिर उसके बाद ये बाइंड किया। अब जो भी हमारा क्लाइंट है वो इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सो वी विल यूज द सेंड टू फंक्शन, राइट। In UDP, for sending any request or sending any message or sending any information, we used to send to function, right? And for receiving those messages or those requests, we use receive from functions. So these are the predefined, pre-built functions in socket programming. So basically यहाँ पे client एक send to function यूज करके यहाँ पे एक मैसेज भेजेगा। अब मैसेज भेज रहा है तो भाई ये सर्वर को रिसीव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये रिसीव फ्रॉम, ये जो भी मैसेज भेजेगा उसको रिसीव करेगा। अब जो भी मैसेज इसने भेजा, लाइक इसने फॉलो किया, लाइक आप किसी को भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी, तो ये फॉलो किया। अब इसके पास ये रिक्वेस्ट भेजा कि फॉलो बैक में, तो यहाँ पे ये क्या किया, रिसीव किया। उसके बाद ये अगेन सेंड टू, ये एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद ये अगेन सेंड करेगा, राइट। जो भी रिस्पॉन्स होगा वो अगेन सर्वर क्लाइंट को भेजेगा। जब ये भेज रहा है तो फिर से ये रिसीव करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लाइंट और सर्वर में बेसिकली ये हमेशा पेयर में काम करेगा। अगर क्लाइंट सेंड कर रहा है तो सर्वर को रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव सेंड कर रहा है तो क्लाइंट को सर्वर सेंड कर रहा है तो क्लाइंट को रिसीव करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ये क्लाइंट क्लोज़ कर देगा, और जैसे ही क्लाइंट क्लोज़ करेगा उसके बाद सर्वर भी क्लोज हो जाएगा। और अगर तुमको दोबारा एक दूसरा कम्युनिकेशन करना है तो फिर से सर्वर एक नया सॉकेट क्रिएट करेगा, आईपी ऐड बाइंड करेगा आईपी एड्रेस और पोर्ट से, फिर उसके बाद क्लाइंट भी अपना सॉकेट क्रिएट करेगा, बाइंड करेगा, फिर उसके बाद ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा इधर से, फिर ये रिसीव करेगा, एंड in this way this communication happen. So basically this is for the UDP, that is connectionless protocols, right? Yeah, so now we will see about the socket function, that is what are the parameters and what are the functions we use in the socket. So basically socket is used for the interface that we know, but what is the socket function, what it contains? So it contains these three parameters. The one is domain, type, and its protocol. So with the help of this socket function we get the file descriptor, right? And this return the integer type value, so that's why we use int socket. And in this we use domain, what type of domain we are using, either it can be IPv4 or IPv6, so according to that we use PFINet or AFINet, right? And what is its type, like what type of sockets we are using, either we are using sock stream or we are using sock dgram. So basically sock stream is used for the TCP type and sock dgram is used for the UDP, and it's a protocol. Basically we set the protocol 0 to have a socket, right? And we can also choose the protocol based on what are the type of its, right? So basically socket, as I told, socket retain a socket descriptor, and if the value of the socket return is -1, then it will be some error. If you are finding that socket is returning -1, so it means that there is something that is a error. So basically in the socket function we declare an sockfd, that is the file descriptor sockfd, and we store the value of that return integer in the sockfd. So in this way this socket function work. Now let's see about the bind function. So basically bind told that what port am I on. So basically it associates a socket with a port on the local machines, right? So port number is used by the kernel to machine incoming packets to a process. तो basically bind functions में क्या क्या parameters होते हैं. In the bind function it is also a integer return value. So we use a sockfd that we get from the socket, and struct. These are the predefined structs in the socket programming. So you have to just remember the syntax. No need to understand so much in this thing because you have to learn, right?
So this is the struct socket adder pointer my adder, and the third parameter, that is sock adder length, right? So let's see here what is this. And socket is the socket descriptor that I told, and it is written by the socket in the above that I've told. And the sock my address is a pointer to struct adder that contain the information about the IP address and the port, right? Because we have to bind through the IP address and the port, so that's why we are using these structs. And adder length is set to the 0, is a adder length is a set to size of struct sock adder. And if return the bind value, basically it return 0 most of time. If it is returning -1, then it means that there is something error in our program. So basically bind told what it told that on what port it is, right? Basically it is used to associate a socket with a port, right? So that was the bind. And one more thing that you should keep in mind, that we do not use the port number less than 1024. Why? Because less than this port number are already reserved for our computer system. So we can use bind port number above more than 1024 and less than 65535, provided they are not already in the use, right? Because less than this already reserved in our computer system or our system. So this was about the port. So let's see the socket structure. What are the structure in the socket? So basically holds the socket address information for the many type of the socket. Like these all are the predefined, pre-built in the socket programming. So you do not to remember all the things, because once you will practice, you will learn all the things automatically. So here struct sock adder, and here unsigned salt SA family. So basically it is the address family for A of inet, like this, and unsigned salt SA data. And here we have used a 14 byte for the protocol address, right? So basically this is the socket structure that is pre-built in the socket programming. So here you see that we have used the struct adder underscore in. What is it? A parallel structure that make it easy to reference element of a socket address, right? So basically socket address के बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो struct sock adder in, we have use int salt int, and basically salt int is also of one data type, one size of 1. And here we have a sin family, sin port, sin adder, sin 0. And here sin 0 should set to all the zeros, and sin adder is for the internet address, and sin port is for the port number, and sin family is set to be AFNet at the PFNet according to the type of domain we are using. Like it may be of IPv4 or IPv6, right? So let's see an example, and then we will see how it is working correctly. So in the example, let's see, we have defined a sock FD, that is the socket file descriptor, and in the structure we have defined the sock adder in my adder, and the socket value written in the sock FD, that is the file descriptor. And here we have used the domain name and domain type, and the protocol is set to be 0. sock stream is for the TCP. If you are using here sock diagram, then it is for the UDP, right? And my address.sin family, that is set to be AFINet, that is a host by order, and my adder port, that is H2NS my port. These are basically the syntax that you have to keep in your mind. And here they have taken the random number, random int adder, right? And just remember these all the syntax, and when I will solve an sample problem or sample example on the client and server, then you will understand properly, right? So let's see the send to function and receive from function in UDP.
So basically in the UDP we use send to for sending any information or sending any request or messages, and receive from function for receiving or taking the information, right? So what contain the parameters of the send to? So here we have a sockfd that we know it take the return value of the socket, that is the socket file descriptor, and it take a message, that the message we are sending or receiving, like sending we are using a send to function, so the message that we are sending here, and the length of the message, the size of the message, in flags that is set to be 0, right? And the const struct sock adder, the address where you are sending those messages, and in to length, right? So let's see what are these parameters. sockfd that I told, socket file descriptor, you want to send the data to. Message is the pointer to the data that you want to send, and 2 is a pointer to struct adder which contain the destination IP and the port, like to which you are sending the port and the IP address of those. like अगर आप किसी को एक लेटर भेज रहे हो या फिर मेल सेंड कर रहे हो तो क्या होता है, सबसे पहले आप उसका एक एड्रेस देते हो, उसका मेल आईडी या फिर डोमेन नेम जो भी होता है, आप उसको सेंड लिखते हो वहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे सेंड करने के लिए हम उसका आईपी एड्रेस एंड पोर्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट? अब यहाँ पे टू लेंथ इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रक्ट एडर, एंड द फ्लैग इज़ ऑलवेज सेट टू बी 0. Basically these all are the syntax, so just keep in the mind flag is set to be 0, and the function return the number of the byte actually sent or -1 on error. So if the -1 is returning the function, then it means that there is some error, otherwise it will just return the number of the byte, right? So this was about the send to function, and let's see what is in the receive from. So in the receive from we have an sockfd void buff message, the message that we are receiving, the length of the message, and the flag, and the strict sock adder from the source of, like the source or the destination from where the message is coming, and in from the length. So let's see the sockfd that you know file descriptor, and the buffer to read the information from, maximum length of the buffer, flag is set to be 0, from is a pointer to the local struct adder that will be filled with the IP address and the port of the originating machine, right? And the from length will contain the length of the address is stored in the from. So basically it returns the number of the byte or received. If there is a -1, then there may be some error. So basically send to and receive functions are almost similar, these parameters, right? So we will see when all the things happen, like we have seen it make the socket, it make the bind, and then it receive, and then it send, and then finally when the communication happen, then it will say okay, now I have done, now let's close the socket, right? So for the closing function, it just contain only one parameter, that is in sockfd, that is the socket function return value, so that is sock file descriptor. So close connection corresponding to the socket descriptor and free the socket descriptor will prevent any more send and the receive message. So it means that if you are closing, then it will not take any send or receive function, the socket program will close here. So this was all about the theory in the socket programming. Now in the next video we will see an example how a server and a client communication happen. So if you like the video, don't forget to hit the like button, and let's meet in the next video. Thank you guys.